अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अजय अली समी और आप देख रहे हैं लर्न विद समी। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर फॉलोज इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। प्रोग्राम एक सेट की इंस्ट्रक्शन की एक सेट होती है जो कंप्यूटर के ऑर्डर फॉलो करती है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के ऑर्डर फॉलो करती है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर ऑपरेशन फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म इन अ मॉडर्न कंप्यूटर दैट जॉन वॉन न्यूमैन आउटलाइंड इन 1945. The program contains a one at a time sequence of instruction that computer follows. The program की types कौन से हैं? Types of programs, there are two main types of program. वैसे तो program के बहुत ज़्यादा types है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो main types discuss करेंगे। उसमें पहला type जो है वो application programs है। Application program में क्या क्या होते हैं? Word processor, game programs, spreadsheet, database systems, graphics, program, web browser, etc. दूसरा जो है वो सिस्टम प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट सर्वर, डाटा बैकअप। इसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्म अ टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस्तेलाह आमतौर पर आला दर्जे की ज़ुबानों से मुराद होती है, जैसा कि बेसिक, सी, Fortran, ADA and Pascal. Types of programming language. Programming language की types क्या कौन सी है? उसकी दो types है, low level programming language and high level programming language. Low level programming language क्या होता है? The low level programming language is a programming language that provides no abstraction from the hardware and it's represented in 0 or 1 forms, which are the machine instruction. निचली सतह की ज़बान एक प्रोग्रामिंग ज़बान है जो हार्डवेयर से कोई तरजीह फराहम नहीं करती और उसे 0 या 1 की शक्ल में पेश किया जाता है जो मशीन की हिदायत है। The languages that come under this category are machine language and assembly language. लो लेवल लैंग्वेज की दो सब टाइप्स है, उनको कहते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज कैन ओनली रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। ये सिर्फ 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। एंड अर्लियर when we have to create a picture or show data on the screen of a computer, then it's very difficult to draw using only a binary digits 0 or 1. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। टू राइट 120 इन कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम 120 को लिखना चाहते हैं, इट रिप्रेजेंटेशन इज 11110010, तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करें। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। ये लर्निंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द असेंबली लैंग्वेज इज इन्वाइटेड। तो इसके लिए क्या करते हैं? असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? Assembly language is more than low level and less than high level language, so it's intermediately language. Assembly language use numbers, symbols and aberrations instead of 0 and 1s. ये निचली सतह से ज़्यादा और आला दर्जे की ज़ुबान से कम है, लिहाजा ये दरमियानी ज़ुबान है। असेंबली की ज़ुबानें 0 और 1 के बजाय अलामती और मुख्तलिफ़ात इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन it uses symbols like add, sub and more. जिस तरह हम एडिशन के लिए ऐड यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए mul एक्सेट्रा। अब एडवांटेज क्या है लो लेवल लैंग्वेज की, मतलब फ़ायदे क्या है? First one, program developed using low level language are fast and memory efficient. Low level language बहुत ही fast और efficient होता है।
fast to run as no need of specific translator. बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है, मतलब ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लो लेवल लैंग्वेज और रिलेटेड टू हार्डवेयर, यह हार्डवेयर के साथ रिलेटेड होता है। लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर एंड स्टोरेज। दे आर सिंपल एंड मशीन कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सिंपल होता है और मशीन इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ लो लैंग्वेज क्या है, नुकसान क्या है इसके? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बल्कि इम्पॉसिबल ही होता है कि करेक्ट एरर्स उनको फाइंड करें। इट्स डिफिकल्ट टू डेवलप, डिबग एंड मेंटेन। थर्ड जो है कॉस्टली, बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है ये। लो लेवल प्रोग्रामिंग यूजुअली पुअर इन रिजल्ट्स इन पुअर, इसका रिजल्ट जो होता है वो पुअर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी होती है। The programmer has unlimited access to the working of a computer system. इसके बाद जो दूसरा टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन अ फॉर्म दैट is close to our human language, enabling to programmer to just focus on the program being solved. No particular knowledge of the hardware is needed as a high-level language creates programs that are portable and not tied to a particular computer or microchip। आला दर्जे की ज़बान एक ऐसी शक्ल में लिखी जाती है जो हमारी इंसानी ज़बान की करीब होती है, मतलब प्रोग्रामर को उस काबिल बनाती है कि वो सिर्फ इस मसले को हल करने पर तवज्जो दे। हार्डवेयर के बारे में किसी खास इल्म की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आला सतह ज़बान ऐसे प्रोग्राम बनाती है जो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं और किसी खास कंप्यूटर या माइक्रोचिप से मुंसलिक नहीं होते। These programming friendly languages are high level as they far removed from the machine code instruction understood by the computer। इसके एग्जांपल्स क्या है? C++, Java, Pascal, Python, Visual Basic। Advantage of high level language, they are easy to read, write and maintain। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है पढ़ने, राइट में, लिखने और मेंटेन करने में। Easy to use and understand, बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है अंडरस्टैंड करने में। मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू कंपेयर लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज मच क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज मच क्लोजर, ह्यूमन के साथ ये बहुत ज़्यादा ही क्लोज होता है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज की it takes additional translation times to translate the source to the machine code। Additional translation times to translate the source to machine code। दूसरा जो है high level programs are comparatively slower than lower level programs। Compared to low level programs, they are generally less memory efficient। क्या? less memory efficient। Cannot communicate directly in hardware। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारी अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।